So let us start the session. Yeah, hi, this is Dr. Sucheta. I am an Ayurvedic physician, and I thank Mompreneur Circle for giving me this opportunity to share about some tips and how do we get knee and joint with this back pain on this platform. Yeah. So knee and back pain, we'll take it differently. First, we'll discuss about knee pains. As we all know that knee pain is everybody, आप किसी से भी पूछ लो, any age group, everybody will say knee pain हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है. And this has become a very common topic nowadays, knee and back pain. So let us discuss about knee pain. Knee pain is usually seen in 3 categories nowadays. Number 1, in kids. Number 2, 20 plus people. Number 3, let us talk about ladies as this is a ladies oriented, but so one is post-menopausal. These 3 things we'll discuss. Number 1, we'll discuss in how kids get affected with knee pains. Number 1, when they overuse their knees, playing की वजह से कुछ भी, so sports induced, overuse and sports induced, malnutrition, कोई भी deficiency होगी बच्चे को, then also he can suffer from knee pain because the body weight which is carried by knee has to be strong so that the body weight can be carried. Number 3 is jumper's knee, which is very common. I don't know how many of you have heard about jumper's knee. Jumper's knee आजकल बहुत ज़्यादा common है for kids, और इसमें you need proper, usually it is treated at home, but if it is not treated, you need to consult the doctor. So by later on I'll tell the how you can treat, home remedies क्या हो सकती हैं, and when you need to go to the doctor. So these are basically for kids we can say, right? And 20 plus usually muscle strain, ligament strain या overworking. 20, 30, 35 की age तक we are in peak this thing of occupation, and काम करने का बहुत ज़्यादा होता है. Like this is the period when we are more energetic, when we work more, but we need to consider कि हमें nutrients चाहिए. We need to take care of your knees so that we don't overwork our knees. Otherwise, we will suffer from these pains. Overworking symptoms क्या होते हैं? You can get stiffness of knees. You can get pain in the knees, or there will be, when you stretch the knees, you are feeling better. So you can say the knee joint has overworked. So this is what we can see in 20 plus. In 40 plus, it will be post-menstrual menopausal, क्योंकि deficiencies बहुत ज़्यादा हो जाती हैं vitamin D की. So that is one of the reason calcium vitamin D deficiency can cause your knee pain. Then if there is any history of fall, आप कभी गिरे हो 20s में, बचपन में, मेजर, जैसे कभी पेट से, जैसे हमें हिस्ट्री आती है पेशेंट्स की, तो बहुत पुरानी हिस्ट्रीज होती हैं. They have fallen from either scooter, either from the tree, so they get this knee pain later in the life. और जब हम एक्सरेज कराते हैं, we get small, we have some parameters to see the injuries, so we see there are injuries. Then obesity तो कोई भी age group में can cause knee joint. Obesity is one of the major reasons for knee pains. Occupational diseases, it is also can be considered as occupational diseases. I'll see to that also. Yes. So occupational diseases, now what happens when you stand for the long hours? It can cause, especially in teachers we have seen when they come to us 50 plus usually. So what happens, उनका कैल्शियम मेनोपॉज के बाद यूजुअली डेफिशिएंसीज चल रही हैं, ओवर एक्सर्शन ऑफ नी जॉइंट हुआ है, और देन इट जस्ट डेटोरेट एंड सेनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है, वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया है आफ्टर मेनोपॉज. दीज आर वन ऑफ फ्यू रीजंस 50 प्लस में यू कैन है. हाउ वी कैन प्रिवेंट these knee prevention? First we'll discuss about the prevention. Please do not skip exercises. Even if you have structural deformities, do not skip the exercises. Stretching of knee joints help. कुछ नहीं करना. Just example, if this is a knee joint, you are sitting on a chair, just this, extend your this or extend or flexion कीजिए knee joint को, थोड़ा सा stretch दीजिए, ठीक है? So I'm just talking about the general knee joint pain. I'm not talking about severe arthritic वाला knee joint. I'm just basic knee joint, ठीक है? Secondly, you should
like when you lose your weight, eat healthy so that you can lose your weight. If you are overweight, then that will help you tremendously on your knee joint pain. You should always wear proper shoes. Usually what in females I'm talking 45 plus, what happens, हमें heels पहनने की आदत है या हमें blocks पहनने की आदत है, तो we think हम तो हमेशा से पहन रहे हैं, इसकी वजह से नहीं हो रहा. No, usually with heels also knees can suffer. ठीक है, you should stand erect. Always stand erect so that your knee is also straightened. I don't know how many of you have. You might have observed on your mother-in-laws. This is the shape of the knee. ये knee है अगर तो थोड़ा सा bow shape knee हो जाता है. And then there is this gait. You know, they will walk very uncomfortably and swinging from one side to another. This is one of the major postural issues which we need to take care. There are a few asanas, which yogasana, which I usually tell my patients to do. This is Uttakata Asana, Veerbhadra Asana, Tadasana, Trikonasana. You can search it online how we do it. And I will tell you basic way how we can treat knee joint pain at home. Right? One, whenever you get knee joint, please check whether there is any swelling, or when you touch it, it is warm. You have to check these things. When you move your knees, is there any crepitus? It means any sound coming from your knees. So you can, if sounds are there, you can say any deformities there, or severe arthritic changes are there, or there are deficiencies, right? How you can I'll tell you quick this thing, how you can do. Take warm water, which is bearable for your body. Put piece of alum into it. Alum Fitcari market में easily available है. Put 2-3 scoops of black salt or your common salt, whatever you use in your kitchen. Put it, and then put any oil you use at home. थोड़ा सा तिल का oil डाल दो in that water warm. Then either you soak your legs into that water. अगर soak नहीं हो पा रहा है because knee joint is bit up, so pour that water over your knees, right? And if you can 15 minutes तक आप pouring करो, then wipe it clean. Use any oil you have, उसको warm करो. If you don't have any pain वाला oil at home, I'll tell you how to make it. Take small quantity of सरसों, take लहसुन, उसको थोड़ा सा mustard oil में या तेल oil में fry करो, उसको sieve करो, and then heat it and apply it after using after pouring that water on your legs. This will be very beneficial. Please check your stats. All the stats are B12, vitamin D, calcium, whether your uric acid is increased or not. You have to consider everything when you are post 40, because these things हमें diagnosis में help करती है, आपको भी help करेगी. Please don't take over supplements. Usually people are taking over supplements. फिर उनको calcium poisoning, these things happen. Then crystals get deposits on the ankles. I don't know how many of you have suffered this, but we have seen over poisoning or over intake of supplementation also harm your body, right? So if anything else specific you want to know about knee joint, because knee joint is a very vast topic, or usually in this thing which I told you about how you can take care of, अगर आप ये daily करोगे, the oil application and the hot fermentation, I'm telling you, if you can get, I think 40-50% of relief एकदम. और हाँ, always put a round pillow. I'm talking just about senior citizens. Round pillow, थोड़ा सा या टाल का pillow बना लो, and if this is your knee joints, put this pillow like this, right? इससे क्या होगा? There will be support given to the your knees, and it will help you. 2 hours के लिए भी करोगे, it will be you will get tremendous relief from it. One. For kids and all, I always say, please don't give them any oral medications. Go for oils. Oils are boon. Oil आप जब बच्चे बड़े होंगे, आप खुद कहोगे इनको तो दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी. Usually बच्चे growth pain से भी सफर करते हैं, तो you should give oil बसात गर्म करो. you should ना regular एक रेजिम बनाओ बच्चों का ऑयलिंग का, मतलब वीकली ऑयलिंग. डोंट थिंक 12 साल का हो गया, 13 साल का हो गया. नो, ऑयलिंग इज द बेस्ट वे टू क्योर एनी डिजीज ऑफ बोन, मसल्स, लिगामेंट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रैक्चर्स. पोस्ट फ्रैक्चर्स भी हम ऑयल एप्लीकेशन के लिए देते हैं, और दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट बैक पेन्स. नाउ बैक पेन्स आर
दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक. इसमें डिजीजेज इंक्लूड होती हैं, इसमें हिस्ट्री ऑफ फॉल्स आती हैं. इट इज अ वास्ट टॉपिक. यूजुअली वी सी back pains in 30 to 40 years of age group. Why? More of sedentary lifestyle we have, and exercises nahi hai, lack of exercises are there. This is the main thing, and sometimes we overwork ourselves, right? Now I'll tell you few reasons how we get this back pains, right? There are lack of exercises. So when you sit for a long time, please do notice on your body कि there is lack of exercise, and muscles contract and relax. When muscles contract and relax, it helps your body to relax और stiffness नहीं होने देते, pain नहीं होने देते. But when we sit for a long hours, आप देखोगे जितने भी लैपटॉप यूज करते हैं लोग, जो भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में है, usually they get low back pains. So when you sit for a long hour, these muscles are not used, so they are unused and they cause stiffness, which radiates towards your lower back. Yes. And then whenever we, जो बहुत हेल्दी होता है आप देखोगे उनकी भी बैक एक होती है, because there is a curvature जिसकी वजह से बैक एक. All the stomach weight is concentrated on your lower back, so obesity is also one of the reason. Chronic diseases, there are many diseases. Lumbago, straightening of spine हो जाती है, slip disc हो जाते हैं, postpartum बहुत ज़्यादा बैकेज होती हैं. एग्जैक्टली प्रियंका, सी सेक्शन के बाद जो लोअर बैक पेन्स होती हैं, एपिड्यूरल इंजेक्शंस के बाद जब आपको एपिड्यूरल दिया जाता है, दैट इज़ मोर फ्रॉम, मेरे ख्याल से आजकल पीपल आर नॉट गोइंग फॉर नॉर्मल डिलीवरीज, बट एंड सर्कमस्टांसेस डू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इफ यू कैन गो फॉर नॉर्मल डिलीवरीज और नॉट. एंड आई थिंक I have got n number of patients, 90% of them C-sections, which are suffering from lower back pain, right? So smoking is also one of the major reasons for backache. और दूसरा, whenever you lift the weight, either you are lifting from the table, from the floor, you need to take care what pressure you are exerting on your body, because सब कुछ back ही concentrate कर रही है. Just you have to concentrate कि वो कैसे आप उठा रहे हैं. That is one of the reasons. और आपने sciatica के बारे में बहुत सुना होगा. It is very common disease nowadays. So what happens when you pick up the weight? There is this nerve sciatica. It compresses between your spine and then वो नीचे की तरफ radiate हो जाती है. So you need to take care about when you are lifting. Please do ये, I know this is very generalized topic, but I think वो छोटा छोटा भी आप imbibe करोगे तो I think future में बहुत अच्छा होगा. So just अच्छा, when you need to visit the doctor, this is one of the thing, है ना, कि वैसे आपने, मेरे पास लोग आते हैं, मैम 4 महीने से या 5 महीने से दर्द है, उसके लिए हमें बहुत डिफिकल्टी हो जाती है. I'll tell you few things when you should visit a doctor. If the pain is persisting for continuously for long hours, जैसे अभी 5 मिनट के लिए हुई, 10 मिनट के लिए हुई, उसके बाद आपने थोड़ा मूवमेंट किया, ठीक होगी, फाइन. बट इफ इट इज getting prolonged for like hours together, हल्का हल्का soft pain, dull pain है, so please do visit a doctor. If back pain is extending towards any part of the body, legs में आ रही है, मेल्स को यूजुअली फ्रंट में आती है, फ्रंटल, फीमेल्स और सबको सियाटिका तो बहुत कॉमन है, एवरीबडी नोज, है ना, अपर बॉडी पार्ट में भी आती है. तो यू शुड विजिट अ डॉक्टर व्हेन एवर इट इज रेडिएटिंग. ठीक है. पेन इन सर्टन पॉस्चर, लाइक व्हेन यू आर स्टैंडिंग और आपको एक प्रिकिंग पेन हो रही है, देयर इज जस्ट समथिंग इज पिंचिंग एंड इट इज सच बैड पिंचिंग जो यूजुअली आपको कभी नहीं हुआ. डू विजिट अ डॉक्टर. See, whenever you pass motions or you urinate and you get back pain, where अजीब सा radiation आता है circle वाला, do visit a doctor. It can be very dangerous. Okay. So, and one main pain जो हम थोड़ा neglect कर देते हैं, which can be connected toward your kidney से related हो सकती है. Their back है, जैसे this is your back spine, उसके साथ में upper part में if you get pain and that pain is continuous and you feel there is something inside, जैसे एक wound हो जाता है ना, जैसे आपको चोट लग जाती है, that is deep pain, right? If you get that pain on, तो please, that is a kidney pain, kidney related issues हो रहा है, या तो stone हो रहा है, या whatever kidney related issues you are getting, do visit a doctor that time, right? Next is, there are many pains which are associated with back pain, which are associated with your organ.
जैसे अपेंडिसाइटिस से, लिवर की वजह से भी बैक पेन्स आती हैं, योर पैनक्रियाज की वजह से सीवियर रेडिएशन होता है, राइट. देयर इज गॉल ब्लैडर इश्यूज, देयर इज यूट्रस इश्यूज. I hope nobody is suffering, but if somebody is suffering from endometriosis, back pain is very commonly seen. और इट इज़ वेरी, मतलब इट इज़ सच ए डिस्टर्बिंग पेन, वो आगे पीछे दोनों रेडिएट होती रहती है. एंड दिस बैक पेन कैन गो टू योर नेक ऑल्सो. यूजुअली हम लोअर बैक को थोड़ा निग्लेक्ट करते हैं, सो इट कैन गो अप टू योर स्पाइन पूरा, और पूरा रेडिएशन होता है सियाटिका का. सो लोअर बैक पेन शुड नॉट बी निग्लेक्टेड. इट कैन बी ओनली क्योर्ड जब आप, जैसे आपने रेस्ट ले लिया, यू आर लाइंग डाउन एंड स्ट्रेचिंग योर फीट एंड यू आर फीलिंग बेटर. थोड़ा सा ऑइंटमेंट लगा दिया, जो भी आपके घर में हैंडी होता है, इफ यू फील देन यू आर फीलिंग बेटर, दैट इज फाइन. बट जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, डू कंसिडर दीज. अच्छा, छोटे बच्चों का आजकल बहुत मेजर इशू है, बिकॉज दे आर नॉट सुपरवाइज्ड वेल, सो दे रन, दे प्ले फुटबॉल. जो फुटबॉल के जर्क्स लगते हैं, दे प्ले फुटबॉल और बास्केटबॉल, तो वो जो रेडिएशन है नर्व का, सो व्हेनेवर दे कम एंड प्ले, और इफ दे कंप्लेन ऑफ ममा बैक पेन हो रहा है या एनी पेन इज देयर इन द बॉडी जनरलाइज, डू आस्क देम कि आपने कोई जर्क किया था, आपने जोर से फुटबॉल मारा था, बास्केट किया था, रोज जोर से क्रिकेट का बैट, मतलब आपको थोड़ा सा उनसे बातचीत करनी चाहिए, सो दैट फ्यूचर में कोई इश्यूज ना आए. फ्यूचर एज इन कि 10 दिन के बाद बेचारे की और सीवियरिटी हो जाए, उससे पहले ट्रीट हिम ऑन टाइम. और थोड़ा सा उसका ईटिंग हैबिट्स, कैल्शियम, विटामिन बच्चों का प्लीज डू नोटिस. Please drop in some questions if you have. I can just guide you accordingly. ठीक है. Few asanas which are very important in normal back pain, which are Bhujangasana, Jatra Parvatasana. ठीक है. Tadasana is very good. Vrikshasana is very good for your back pain. But one more thing before going further, I want to tell you. If you are having extreme pain anywhere, backache, knee pain, anywhere in the body, please don't think कि मुझे इसने ऐसे बोला था एक्सरसाइज, या आपने YouTube से ले लिया, या आपने गूगल कर लिया ये करना चाहिए. You will spoil your body. Yeah, you will spoil your body. You will feel कि ये मेरा बढ़ गया, and then you will blame the asanas or XYZ, right? So please think exactly what problem you are suffering from, then go for it. Post section can also, yes it can be, but post section at least for 2-3 months, और आपका your wounds should all be healed properly, and I think there should be no bone deformities, right? कोई slip disc का problem नहीं होना चाहिए. lumbago में ना straighten हो जाती है spine, so there are symptoms. You can feel better with the asana, but वो भी आप ऐसा नहीं है कि एक दिन 10 सेट कर लो. No, start slowly. Start with stretching. Start with asana. Easy वाले asanas करो. Give 15 minutes to your body. थोड़ा warm up करो, और थोड़ा बैठ के करो, थोड़ा प्राणायाम से start करो. This is how we do it. Then you can, yeah. Now I'll tell you what are the precautions you should take when you're suffering from low back pain specifically, right? Number 1, I've told you, lifting of weight. If you are prone to back pains, मैंने देखा है there are people who are prone to, क्योंकि उनकी nerves इतनी weak होती हैं, they are prone to just sit on the floor, pick up the stuff and then get up slowly. उसको पूरा bend करके उठाने की जरूरत नहीं है. Sit on the floor and then, जो पूजा करते हैं लोग, please put a stool or a chair and then do पूजा. पूजा की वजह से बहुत ज़्यादा हमने देखा है बैक पेन सियाटिका में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. और like again picking up something from the floor, I told you. ठीक है. Whenever you get up from the bed, don't get up like this. Tilt towards your left lateral position or right lateral position. Take support of your hand and then get up. इसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि पहले मैं ऐसे करती थी, अब मैं ऐसे कर रही हूँ. नो, यू आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी. ठीक है. व्हेन यू गेट अप लाइक दिस, देयर इज सडन जर्क ओवर द बैक, एंड व्हेन यू विल डू साइड लैटरल पोजीशंस, आप इजीली, द स्पाइन विल बी स्ट्रेट एंड देन यू कैन इजीली लिफ्ट योर बॉडी फ्रॉम द बेड. ठीक है. डू नॉट इंडल्ज yourself in excessive walking, excessive yogasans, excessive exercises. I have seen people, it's very funny, and I know many of you might be doing it, but it is not right. I have seen
किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है एंड दे कम टू मी एंड दे टेल मैं तो ऐसे 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 एक्सरसाइजेस करती हूँ. नो, आप अपने पर्टिकुलर एरिया को इतना ज़्यादा वो कर रहे हो कि लिगामेंट्स और मसल्स इतने ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं, विच इज़ डिफिकल्ट फॉर अस. सो डू इट वेरी स्लोली एंड व्हेन योर डॉक्टर सेज सिवियरिटी ऑफ डिजीज होती है ना, जैसे अब आपको एग्जाम्पल माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है तो आप दूध पी के कुछ भी करके रात को ठीक कर लोगे, लेकिन अगर आपको 4 दिन तक कॉन्स्टिपेशन है, आप कुछ तो सोचोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, तो पेन्स भी ऐसे ही कंसिडर करनी चाहिए आपको. ठीक है. Now the same oil I told you how you have to prepare with the knee, you prepare with the knee this thing knee joint के लिए सेम आप प्रिपेयर करो, देन उसको गर्म करो सॉफ्ट. एंड आपको मसाज नहीं करनी है पेन इफेक्टेड एरिया में, आपको पाम से धीरे 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 सॉफ्टली अप्लाई करना है फुल बैक में. यूजुअली बैक के लिए मैं हमेशा कहती हूँ पूरे स्पाइन में करो, बिकॉज स्टिफनेस फुल स्पाइन पे आती है. ग्रेजुअली धीरे धीरे ना विद दीज सॉफ्ट मूवमेंट्स करते हुए, विद सॉफ्ट मूवमेंट्स अप्लाई पेन ओवर योर लोअर बैक एंड ग्रेजुअली थोड़ा हिप्स वाले एरिया में, क्योंकि वहाँ पे नर्व्स की वजह से भी अपर बैक में पेन आ जाती है. फॉर द पीपल who have undergone C-sections, right, I will ask them, अगर आपको कोई भी लोअर बैक का प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप फीडिंग दे रहे हो, कम दे रहे हो, यूजुअली कम होता है सी सेक्शन में, तो प्लीज ट्राई टू लूज वेट. अभी लूज कर लोगे, आफ्टर 6 to 7 months और 1 year it is very very difficult to lose weight, right? And do not रात का खाना, मतलब manage your diet, eat well but manage your diet, take lots of water. और डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए whenever you get pains in joint pains, right? You have to avoid all fruits, all cold comforts post 6 p.m. post 6 I'm not saying again 6 बजे से पहले कुछ भी खाओ, 6 बजे के बाद avoid the things so that आप रिकवरी आपकी जल्दी हो जाए, सिवियरिटी बढ़े ना, right? Please drop in some questions if you have. Yeah, so this is what exactly what we do when we give home remedies to the patients, right? And there are so many diseases which we are suffering. Aajkal, I think do take a review of doctor whenever you feel अब control में नहीं आ रहा, अब पॉसिबिलिटी नहीं है, अब आई नीड टू शो. जितना आप देर करते जाओगे, जितना आप डिले करते जाओगे, उतनी सिवियरिटी बढ़ती जाएगी. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस ऑल्सो टू ट्रीट and for you also. We usually what I do, we have a pain relieving oil which is very good, and usually I have been prescribing it from past 10-12 years during my this thing practice. It is very beneficial. हमने देखा है कि home घर पे ही काफ़ी रेमेडी हो जाती है इससे. Please do not use any coconut oils, almond oils for your pain relief. वो pain relief नहीं करेगा. कोकोनट विल बी हार्मफुल. एलमंड थोड़ा सा हॉट पोटेंसी का है, तो आपकी वो मसल्स थोड़ी सी रिलैक्स कर देगा. अदरवाइज यूज तिल बेस्ड ऑयल्स और मस्टर्ड ऑयल्स फॉर यू, और थोड़ा सा हॉट फर्मेंटेशन. हॉट फर्मेंटेशन शुड बी गिवन विद हॉट वाटर बॉटल. डोंट यूज एनी आजकल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स आर कमिंग अप, ब्लैंकेट्स, योर डोंट यूज ऑल दिस थिंग. दैट विल harm, that will weak your nerves, and later on you will suffer with this, right? And yeah, this is what exactly. Ask me any questions if you want to ask. I can just give you a small, if anybody is suffering from any specific pain, radiations, let me know. I can just give you some home remedy, or I can guide you. So I was talking about my pain relieving oil. This is my pain relieving oil. This is very nice. I'm not telling you to buy it, but I'm telling you these are one of the hero products, and we have seen a very very tremendous relief in pains, and it nourishes your bones, and it is very good for kids for growth pains. It is very good in muscles, any ailment you are having, pains, swellings, but again please, rheumatic arthritis में और योर नॉर्मल आर्थराइटिस में बहुत फ़र्क है. तो आई थिंक प्लीज़ वो रोमेटिक आर्थराइटिस के नी जॉइंट्स पेन में और बैक पेन में यू विल गेट मोर ऑफ रेडनेस, मोर ऑफ वार्मथ विल बी देयर. जब आपने जॉइंट को छुओगे देयर विल बी मोर ऑफ वार्मथ.
and you will feel a sense of heaviness in the joints in case of rheumatic arthritis. तो उसमें ऑयल्स बहुत ध्यान से यूज करने हैं. यूज ड्राई सेक दिया. यू कैन टेक ड्राई दिस थिंग, salt से you can put on your back and your this thing, your knee joints in a heat the salt and then take a like cotton cloth, उसमें गरम salt डालो और थोड़ा 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 ना ऐसे ऐसे सेक दो. बहुत फर्क पड़ता है उससे भी. ऑयल्स यूजुअली जो आप घर में यूज ऑयल करते हो rheumatic arthritis में, it aggravates the pains. Oils are not indicated for rheumatic arthritis at home, जो home remedies होती है. I hope this session was helpful for you. Any queries you can drop in. I will be happy to answer it. Yeah. Okay. Yeah, thank you once again. I hope we can conduct more sessions so that it is beneficial for you. Hope this session was